working overtime without proper pay, that era is over. The law now requires double wage every extra hour. This protects for exploitation and fair pay. Employers must comply with the new rules. Overtime wages, double the normal rate. Working extra hours without proper overtime pay? That era is now over. Under Section 14 of the Code on Wages 2019, if an employee whose minimum rate of wages has been fixed under the code works beyond normal working hours, the employer must pay overtime for each extra hour at a rate of at least twice the normal wage. This is a mandatory minimum. The employer cannot negotiate a lower overtime rate. Every employer must comply with the daily and weekly working hour limits prescribed under the code and the rules made thereunder. If an employee works even 1 hour beyond the prescribed limit, double wages for that extra hour become payable. This provision protects workers from exploitation through excessive working hours, without fair compensation. Employers must track working hours meticulously and pay overtime promptly. ओवरटाइम वेजेस नॉर्मल रेट से 2 गुना बिना उचित ओवरटाइम पे के एक्स्ट्रा घंटे काम कर रहे हैं, वो जमाना अब गुजर गया। कोड ऑन वेजेस 2019 के सेक्शन 14 के अंतर्गत अगर कोई एम्प्लॉई जिसकी मिनिमम वेजेस कोड के तहत फिक्स की गई है नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा काम करता है तो एम्प्लॉयर को हर एक्स्ट्रा घंटे के लिए कम से कम 2 गुनी नॉर्मल वेज के रेट पर ओवरटाइम पे करना अनिवार्य है। ये एक मैंडेटरी मिनिमम है। एम्प्लॉयर इससे कम ओवरटाइम रेट पर कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकता। हर एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है कि वो कोड और उसके अंतर्गत बने रूल्स में तय डेली और वीकली वर्किंग आवर लिमिट्स का पालन करे। अगर कोई एम्प्लॉय प्रिस्क्राइब लिमिट से 1 घंटा भी ज्यादा काम करता है तो उस एक्स्ट्रा घंटे के लिए डबल वेजेस पेएबल हो जाती हैं। ये प्रोविजन वर्कर्स को एक्सेसिव वर्किंग आवर्स के जरिए होने वाले एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करती है, जहां बिना उचित मुआवजे के काम लिया जाता था। एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि वो वर्किंग आवर्स को मेटिकुलसली ट्रैक करें और ओवरटाइम का भुगतान प्रॉम्प्टली करें।